हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2026 की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का आज हम यहाँ पे टॉपिक 11 एमएस एक्सेल जिसमें कुछ फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट्स के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है एमएस एक्सेल के कुछ एमसीक्यूज। वैसे देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 23 टॉपिक 2000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है what type of chart is typically suitable for single data series? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम चार्ट, कोन चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ पाई चार्ट। पाई चार्ट रिप्रेजेंट proportion of whole and are generally used for single data series only. Okay, next, second, which excel function is used to match multiple value and return the first match? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट if function, if s function, IIF function and switch function। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ switch function, because switch evaluate one value against the list of value and return corresponding result. It's simpler than nested if for multiple condition matches. Next, third, MS Excel formula always start with which symbol? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्लैश, f, इक्वल एंड डॉट डैश। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड इक्वल साइन। It tell to treat the entry as a formula rather than text. Next, fourth, which keyboard shortcut is used to switch between open Excel window? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल प्लस टैब, सेकंड अल्टर प्लस टैब, थर्ड कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टैब एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कंट्रोल प्लस टैब। इट साइकिल थ्रू ओपन वर्कबुक विद इन एक्सेल। Next, fifth, to copy the value from cell above into the current cell, which shortcut is used? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, सेकंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड, देन अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड एंड कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस इन्वर्टेड। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड। दिस शॉर्टकट पेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सेल डायरेक्टली अबव विदाउट कॉपिंग द फॉर्मूला। Next, sixth, which of the following is not a valid data type in MS Excel? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन न्यूमरिक एंड डेट। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, Excel does not have a specific character data type, but text entries including character are considered as a text format. Next, seven, the ASCII value of character C in which number? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 65, 66, 67, 68। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड 67, बिकॉज ASCII नंबर स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल दैट इज 65। ओके, देन 65A, 66B एंड 67C। ओके, नेक्स्ट 8, which is the correct syntax of if function? If means logical, if equals to if logical test, then value equals to true comma value equals to false. Second, if equals to if value then test. थर्ड if test value and none of the above। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट इक्वल टू if then logical condition, if condition is true then true value is print, otherwise false is written। ओके, नेक्स्ट, वैसे देखिए जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की इंडिकेटिव सिलेबस जो दिया है उसके हिसाब से पूरे टॉपिक्स के एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। जिनको भी पीडीएफ परचेस करना होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ, which chart type is not valid in MS Excel? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एक्सिस चार्ट एंड लाइन चार्ट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड एक्सिस चार्ट। एक्सिस चार्ट इज नॉट अ स्टैंडर्ड चार्ट टाइप, एक्सेस आर पार्ट ऑफ अदर चार्ट टाइप। ओके, नेक्स्ट, टेंथ, in MS Excel which function round the number down the nearest multiple of signified significance? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट राउंड फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन एंड ट्रंक फंक्शन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड फ्लोर फंक्शन। इट राउंड डाउन टुवर्ड्स 0 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट 11,
द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन एक्सेल इज कॉल्ड एज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेल, रेंज, ब्लॉक, सेल एड्रेस। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट सेल। सिंगल बॉक्स फॉर्म बाय रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेल। नेक्स्ट 12, what does the char function in Excel do? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ASCII वैल्यू, सेकंड रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन ASCII कोड, थर्ड कॉन्कैटिनेट कैरेक्टर एंड फोर्थ फाइंड द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन ASCII कोड बिकॉज char रिटर्न द कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द न्यूमेरिक ASCII कोड। नेक्स्ट 13, which chart type best display the proportion of part to a whole? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड स्कैटर प्लॉट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड पाई चार्ट। पाई चार्ट यूजुअली शो रिलेटिव प्रोपोर्शन एज अ पार्ट ऑफ 100%। नेक्स्ट 14, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्विच फंक्शन इन एक्सेल? स्टार्टिंग में ही देखा था अपन ने, टू इवैल्यूएट मल्टीपल कंडीशन एंड सिलेक्ट वैल्यू बेस्ड ऑन द फर्स्ट ट्रू कंडीशन, second to replace multiple nested if statement, to switch between sheet and fourth both A and B। तो करेक्ट आंसर आएगा both A and B because switch simplify multiple logical comparison replacing nested if। okay, next 15, which chart is ideal for showing data trends over time? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पाई चार्ट, लाइन चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड हिस्टोग्राम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड लाइन चार्ट। लाइन चार्ट डिस्प्ले डेटा पॉइंट कनेक्टेड ओवर टाइम गुड्स फॉर ट्रेंड्स। वैसे देखें जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अकाउंट्स पीडीएफ, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर अवेयरनेस। जिनको भी पीडीएफ परचेस करना होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।